थ्रू। लेकिन जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है बेटे। क्यों? क्योंकि सी ऑप्शन में बोलता है रबड़ ग्लव कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। कहता जो सी ऑप्शन में है रबड़ जो है ना वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब तो होता है कम ज्यादा करना। तो रबड़ ऐसा कुछ नहीं करती कम ज्यादा, वो तो करंट को निकलने से रोक देती है। बिकॉज रबड़ इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता। और कौन सी चीजें इंसुलेटर हो सकती हैं बेटे? प्लास्टिक। प्लास्टिक में से करंट पास नहीं होता, ये भी एक इंसुलेटर हो सकता है। और कौन सी चीज इंसुलेटर होती है? कांच, ग्लास। कांच में से भी बिजली पास नहीं होती। ठीक है। लेकिन जो मेटल्स होती हैं, आयरन, उसमें से बिजली पास हो जाएगी। कॉपर, उसमें से भी बिजली पास हो जाएगी। तो मेटलों में से बिजली पास हो जाती होती है। तो ठीक है। और इसी तरह से जब अगर आप घर किसी हार्डवेयर की शॉप से लोहे की पाइप खरीद कर लाते हो घर, तो बड़े ध्यान से आना होता है। मान लीजिए आपने लोहे की पाइप ली और हार्डवेयर की दुकान से आप ऐसे चलते हुए उसको शोल्डर पे रखते हुए आ रहे हो और उसका एक किनारा बिजली की तार से ऊपर टच कर गया। तो लोहा क्या है? मेटल है। उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, आपकी बॉडी से निकलेगा और जमीन में चला जाएगा, आपकी वहीं पर डेथ हो सकती है। राइट। अगर प्लास्टिक की पाइप लाओगे तो वो इलेक्ट्रिक पाइप इलेक्ट्रिक केबल से ऊपर टच भी कर जाएगी, तो प्लास्टिक तो करंट नहीं आएगा उसमें, क्योंकि प्लास्टिक भी क्या है? इंसुलेटर। ठीक है बेटे। ये वाला क्वेश्चन जिसको समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश, अगर आपको समझ आ गया ये, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली बात बोलता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें से बिजली गुजर जाती है। ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑप्शन। बोलो, कौन बच्चा बताएगा ये सही है या गलत? ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर। जो बच्चे सोचते हैं कि ये बात सही लिखी हुई है, जो बच्चे कहते हैं सर ये सही लिखी हुई है, वो एक फिंगर खड़ी करेंगे। जो बच्चे सोचते हैं गलत है, वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे। क्या बात? रेज योर हैंड। वन ऐसे और या टू, या टू या वन। देखें कौन बच्चा। एमी का वन, शाबाश। एमी का, ग्रैमी का भी वन, भारत रत्न का वन, और बुकर का वन, वेरी गुड। बॉलॉग का वन, और का भी वन, बिल्कुल सही। सभी बच्चे सही कह रहे हैं कि ये गुड कंडक्टर है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है एयर गैप सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्ट एज कंडक्टर। कहता जो ये स्विच है ना, स्विच, उसमें जब एयर गैप होएगा ना तो उसमें से बिजली गुजर जाएगी। इधर से करंट भेजेंगे तो उधर करंट पहुंच जाएगा। हालांकि इसमें एयर गैप है, यहाँ पर ये टच नहीं कर रहे, एयर गैप। तो जो बच्चे कहते हैं ये सही लिखा हुआ है वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, और जो बच्चे कहते हैं ये गलत लिखा हुआ है सर, वो डबल फिंगर। शाबाश। अगर करंट निकल सकता है तो एक फिंगर, नहीं निकल सकता है तो डबल। ओके ओके, लेट मी सी, लेट मी सी। एमी का बिल्कुल सही, शाबाश डाउन। ग्रैमी का भी सही है। भारत रत्न कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अच्छे से जवाब दो भारत रत्न वाले। भारत रत्न, भारत रत्न का भी बिल्कुल सही हो गया बेटे। और अरोरा का तो बहुत अच्छा, बिल्कुल सारे बच्चे सही दे रख गए। बॉलॉग में भी सही है। लेकिन बुकर के बच्चे सही जवाब नहीं दे रहे, गलत भी दे रहे हैं सही भी दे रहे हैं बेटे। बुकर वाले बच्चों को याद रखना है, अगर यहाँ से एयर गैप होता है तो बिजली नहीं गुजर पाती। तो गलत है ये वाली चीज आपको डबल फिंगर खड़ी करनी चाहिए। ठीक है, एयर गैप में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर पाती। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कौन बच्चा कहता है। बेटे एक मेटल होती है सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर सिंबल भी याद रखना है, AG। ओके। अब वो कहता है, क्या कह रहा है? सिल्वर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन एनी अदर मेटल।
जो सिल्वर है, अगर मान लीजिए ये सिल्वर की रॉड है, तो इसमें से जो बिजली निकलेगी वो सबसे बढ़िया निकलेगी किसी भी दूसरी मेटल से। यानी वो कहता है सिल्वर इज बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर, बिजली मेटल सिल्वर में से निकलेगी, सबसे बढ़िया निकलती है। जो बच्चे कहते हैं ये सही लिखा हुआ है वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, जो सोचते हैं नहीं नहीं सर ये गलत लिखा हुआ है, सिल्वर से भी अच्छी अच्छी होती हैं जो बिजली को ज्यादा निकाल सकती है, वो डबल फिंगर खड़ी। शाबाश, जल्दी बताओ। और एमी का गलत हो गया इस बार, सॉरी सॉरी। ग्रैमी का ठीक है, बिल्कुल सही। बुकर ने जो जवाब ही नहीं दे रहे, बुकर के बच्चे, बुकर के बच्चे जवाब दो बेटे। शाबाश। बुकर स्टूडेंट्स, सिल्वर इज द बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर। क्या कोई मेटल सिल्वर से भी बढ़िया कर सकती है कि नहीं? भारत रत्न, भारत रत्न बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बुरलॉग मिक्स आंसर आ रहा है। औरा का बिल्कुल सही, शाबाश, औरा के बच्चे सही कह रहे हैं। और बुकर के सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बेटे। ध्यान से सुनना, सिल्वर बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर नहीं होता, सिल्वर से भी अच्छा कौन कंडक्टर होता है? गोल्ड। लिख लेना चाहिए, शाबाश लिख लो। गोल्ड इज इवन बेटर कंडक्टर देन सिल्वर, बेटर कंडक्टर देन सिल्वर। ओके। लेकिन कोई बच्चा बोले मेरे से सर जो सिल्वर होता है कॉपर से भी अच्छा होता है, बिल्कुल कॉपर से भी। सिल्वर सर एल्यूमिनियम से भी अच्छा होता है, एल्यूमिनियम से भी अच्छा होता है। लेकिन जो गोल्ड है ना, गोल्ड, ये बिजली को ज्यादा आसानी से निकाल पाता है सिल्वर के मुकाबले। गोल्ड सिल्वर के मुकाबले बेटर कंडक्टर होता है, इसलिए ये वाली ऑप्शन गलत लिखी हुई है बेटे, ये वाली ऑप्शन गलत है, ये वाली ऑप्शन गलत थी, ये ह्यूमन बॉडी वाली सही थी। अब एक और क्वेश्चन बचा है इसमें, शाबाश। कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स अप ए बल्ब नो हीट इज प्रोड्यूस्ड। कहता है फोर्थ क्वेश्चन में, जब हम बल्ब में से लाइट पैदा करते हैं, बिजली पास करवा के, बल्ब में से लाइट तो पैदा होएगी होएगी। कहता है इसमें से लाइट पैदा हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन कहता है इसमें से हीट नहीं निकलती, नो हीट कम्स आउट, नो हीट। ओके, कहता है हीट नहीं आती। अब जो बच्चे कहते हैं यस सर जब बल्ब जलता है उसमें से हीट बाहर नहीं आती, अगर वो ऐसा मानते हैं तो एक फिंगर खड़ी करो। कोई बच्चा कहता है नहीं नहीं सर ये गलत लिखा हुआ, हीट भी बाहर आती है, ये गलत लिखा हुआ है, तो वो दो। जो बच्चे कहते हैं हीट आती है, शाबाश। अब बिल भारत रत्न को शाबाश दी जाती है, वेरी गुड। एमी को भी शाबाश दी जाती है, ग्रैमी को भी शाबाश दी जाती है। बुकर के बच्चे नहीं बता रहे, एबल के बच्चे नहीं बता रहे, द्रोणाचार्य का बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, द्रोणाचार्य के बच्चों को पढ़ने का ध्यान नहीं है। बुरलॉक बिल्कुल सही, बुरलॉक बच्चे। औरा का बच्चे भी बिल्कुल सही, शाबाश। अब मैं बता दूं, जब बल्ब जगता है तो उसमें से लाइट तो बाहर आती है, हीट भी आती है, हीट आल्सो कम्स आउट। तो हीट आती है, इसने पेपर में लिखा नहीं आती, इसलिए ये गलत लिखा हुआ है इसका, शाबाश। तो कौन कौन सी बातें यहाँ पर, ये देखो ये गलत, ये भी गलत, और हमने ये बताना था इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही है। और एयर गैप, एयर गैप में से वो कहता है करंट जो है ना एयर गैप में से, एयर गैप, एयर गैप सराउंड्स एन इलेक्ट्रिक करंट एज ए कंडक्टर ना, ये भी गलत है। सिल्वर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन एनी मेटल, ये भी गलत है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स अप द बल्ब नो हीट इज प्रोड्यूस्ड, ये भी गलत है, हीट तो प्रोड्यूस होती है बच्चे। तो इसका मतलब जो नीचे ऑप्शन दी हुई है ना बेटे, उसमें याद रखना, सिर्फ ये सही कर लो सभी बच्चे, सही कर लो। इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी वाला ही मैटर सही दे रहा। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट ए ऑप्शन के साथ 1 और 2 लिखा हुआ है ना, 1 और 2, ये 2 काट दो, 2 काट दो, बस 1 कर दो, इसको सही कर दो सभी बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर
6 पे हो गया, 7 पे चलेंगे। 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7। 7 कह रहा है करंट इन ए सर्किट फ्लोज। ध्यान से सुनना बच्चे, ये एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ हमने एक बल्ब बना दिया, इधर कॉपर की वायर लगा दी, यहाँ टच कर दिया, और यहाँ पर हमने ऑन ऑफ की लगा दी, और की को ऐसे टच कर दिए दोनों टर्मिनल, तो हम कहते हैं की इज क्लोज्ड। क्लोज्ड को हम ऑन भी बोल सकते हैं, और ये यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ी हुई है। अब वो कहता है कि आप बताओ करंट किधर से किधर फ्लो करेगा। ए ऑप्शन में बोलता है करंट फ्लोज, हम वैसे आप नॉलेज के लिए याद रखना, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना बेटे, वो हमेशा रेड कलर का होता है, रेड कलर का। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो हमेशा ब्लू कलर का होता है। नेगेटिव टर्मिनल हमेशा ब्लू कलर का होता है, सभी बच्चों ने याद रखा। ओके, तो जो करंट होता है बेटे, वो हमेशा ही पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। करंट को आई से लिखते हैं, करंट को आई से लिखते हैं। जैसे बल्ब में से गुजरेगा, बल्ब ग्लो करेगा, करंट इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, और नेगेटिव टर्मिनल में वापिस आ जाएगा, करंट एंटर करेगा। ओके, तो हमेशा याद रखना करंट। अच्छा, अगर आपसे पूछे सर करंट तो इधर जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर से जाते हैं किधर को, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पूछूंगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उल्टे होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन जो है इधर को जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ही नेगेटिव पार्टिकल को छोड़ सकता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी ये आएंगे ब्लू वाले टर्मिनल से आएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे उधर को जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो 7th क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर आप सोचते हो ए ऑप्शन तो सिंगल फिंगर, अगर आप सोचते हो बी ऑप्शन डबल फिंगर, सी ऑप्शन ट्रिपल फिंगर, डी ऑप्शन तो 4 फिंगर्स, जल्दी सिलेक्ट योर आंसर। भारत रत्न ने जवाब दे दिया बेटे, भारत रत्न ने मेरे को बता दिया कौन सा ऑप्शन है। बिल्कुल सारे बच्चों को शाबाश है भारत रत्न के। Please, ओके, sir. Excuse me, sir. यस Sir, please take the camera control of sixth able. We have joined late. मैम, प्लीज पार्डन, व्हाट आर यू सेइंग? Sir, I am saying that please take the camera control of sixth able. सिक्स्थ एबल, सिक्स्थ So, एबल, not visible to you. हाँ, सिक्स्थ एबल मैम, ये आपकी तरफ से ना वहां से कैमरा सेट होएगा, हमारी तरफ से नहीं होएगा मैम। वो हाँ, उसका हाथ से नीचे को करना पड़ेगा आपको। हाँ, थोड़ा और नीचे करिए। हाँ, बस बस बिल्कुल सही हो गया, देखो बिल्कुल सही हो गया मैम। ओके बेटे, तो अभी सभी बच्चों ने मेरे को सबसे, भारत रत्न ने सबसे पहले ऑरा, ऑरा बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बुकर, बुकर गड़बड़ कर रहा है, बुकर तो गलत कर रहा है बेटा ना। एमी सही कर रहा है, बिल्कुल सही। तो याद रखना है, आपने इसमें याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। लेकिन जो करंट होता है ना, करंट सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने 3 फिंगर खड़ी करी थी उनको सभी को शाबाश, शाबाश बेटे। ओके, अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कहता जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट, सभी बच्चों को याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट का खुद का सिंबल आई होता है।
हमेशा। इसको माप इसको मापने के लिए जो यूनिट होता है, इट्स यूनिट, यूनिट वो कौन सी है? शाबाश। वो ए ऑप्शन में कह रहा है एम्पियर, बी ऑप्शन में कह रहा है वोल्ट, सी ऑप्शन में कह रहा है ओहम, डी ऑप्शन में कह रहा है क्यूलम, COULOMB, क्यूलम। बताओ कौन सा सही है? जो सा सही लगता है उतनी फिंगर्स। ओके, भारत रत्न को शाबाश दी जाती है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सारे डाउन कर लो, भारत रत्न सभी का ठीक है। एबल का नहीं ठीक, एबल का औरा का, औरा का भी नहीं ठीक बेटे, औरा का नहीं ठीक है। ठीक है। एमी का बिल्कुल सही, एमी का बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और बुकर तो जवाब नहीं दे पा रहा, बुकर नहीं सही। और द्रोणाचार्य का बिल्कुल सही, शाबाश। अर्जुन के बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे। अर्जुना, अर्जुना के बच्चों का सही है बेटे, याद रखना हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा एम्पियर से मापते हैं और इसका सिंबल होता है ए। तो एक बात याद रखनी है सभी बच्चों ने, कि आपको बाकी बेटे आपको बाकी के भी याद होने चाहिए। जो वोल्ट होता है ना, वो किसकी यूनिट होती है? वोल्टेज की। याद रख लेना सभी बच्चों ने। जो ओम होती है वो किसकी यूनिट होती है? ऑफ रेजिस्टेंस की। और जो क्यूलम होती है वो किसकी यूनिट होती है? ऑफ चार्ज की। चार्ज। सभी बच्चे नोट कर लें, ये आपको करंट की यूनिट एम्पियर, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, और चार्ज की यूनिट क्यूलम। सभी बच्चे नोट कर लें, किसी और पेपर में पूछा जा सकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बता रखे हैं कि बताओ, कहता है इनमें से कौन से सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा? विच वन ऑफ द टू बल्ब्स विल ग्लो? ठीक है, ध्यान से सुनना बेटे। एक बल्ब यहां लगा हुआ है, बल्ब 1। दूसरा बल्ब यहां लगा हुआ है, बल्ब 2। और यहाँ पर हमने बैटरियां लगा दी हैं इनको करंट देने के लिए। एक बैटरी V1, उसकी मदद के लिए एक बैटरी और लगा दी V2। जैसे इन बैटरी को ऑन करेंगे, कौन सा बल्ब ऑन होएगा? जो बच्चे कहते हैं सर सिर्फ बल्ब 1 ऑन होएगा, 2 नहीं होएगा, वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, 2 नहीं होएगा। जो बच्चे सोचते हैं नहीं सर बल्ब सेकंड वाला बल्ब ऑन होएगा, फर्स्ट वाला नहीं होएगा, वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे। जो बच्चे कहते हैं नहीं सर दोनों बल्ब ग्लो हो जाएंगे, वो सी फिंगर खड़ी करेंगे, 3 फिंगर्स खड़ी करेंगे। जो बच्चे कहते हैं नहीं सर कोई भी बल्ब ग्लो नहीं होएगा, वो 4 फिंगर खड़ी करेंगे। शाबाश। इसको स्विच ऑन करने से कौन से बल्ब ऑन होंगे? हरी अप। एमी का बिल्कुल सही, शाबाश। सभी बच्चों को शाबाश एमी के। भारत रत्न कह रहा है कितनी फिंगर्स खड़े? भारत भारत रत्न कहता है एक। डाउन भारत रत्न इस बार नहीं बता पाए बेटे। ब्लॉक बहुत अच्छे, ब्लॉक का सभी बच्चों का सही है। और द्रोणाचार्य का भी सही है, बिल्कुल सही। और एबल के बच्चे भी सही बता रहे हैं भाई, बहुत अच्छे। एबल के बच्चे तो कमाल कर दिए, सारे बच्चे सही बता रहे हैं। ग्रामी के बच्चे मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं, गड़बड़ कर दी। ग्रामी के भी सही बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, शाबाश। बेटे जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ना, तो आप देखो दोनों बल्ब का सर्किट ऑन है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा चलेगा चलेगा, यहां से निकलेगा करंट, तो ये ग्लो करने लगेगा। फिर वही करंट आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और इस बल्ब को भी करंट पास करेगा, इसके फिलामेंट से भी, ये भी ग्लो करेगा, ये भी ग्लो करेगा, और वापिस नेगेटिव टर्मिनल में करंट चला जाएगा। दोनों बल्ब्स का सर्किट कंप्लीट है, दोनों ग्लो करेंगे। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन सही करा, 3 फिंगर खड़ी करी, उन सभी को शाबाश। सी ऑप्शन, शाबाश। किनका किनका सही था? रेज योर हैंड, देखें किसका किसका सही निकला। वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
वो एक हमें सर्किट बना रखा है। देखो बेटे, इधर बैटरी लगा रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर दो बल्ब, एक यहाँ पर की लगा रखी है, की, इसको की 1 बोल दिया उसने, ओके। और यहाँ पर एक दूसरी की लगा दी है, की 2 बोल दिया, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब वो बोलता है विच वुड द बल्ब ग्लो इफ K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। K1 को तो कहता क्लोज कर दिया, क्लोज का मतलब ऑन कर दिया, मतलब इसके टर्मिनल आपस में जोड़ दिए। K2 को कहता ऑफ रखा, ओपन रखा, ओपन का मतलब होता है ऑफ। देखो उसके दोनों टर्मिनल्स में एयर गैप है। कहता ऐसे करने से बल्ब ग्लो होगा कि नहीं। जो बच्चे कहते हैं सर बल्ब जग जाएगा, वो एक फिंगर खड़ी करेंगे। जो बच्चे कहते हैं नहीं सर नहीं जगेगा, वो 2 फिंगर खड़ी करेंगे। शाबाश, जल्दी बताओ। जो बच्चे कहते हैं नहीं जगेगा, जो बच्चे कहते हैं नहीं जगेगा डबल फिंगर। जो बच्चे कहते हैं बुकर जवाब नहीं दे सका, एमई के बच्चों को शाबाश दी जाती है। औरा के बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, ग्रैमी बिल्कुल सही बता रहा है, एबल बिल्कुल सही, भारत रत्न बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अर्जुना के बच्चे बिल्कुल सही, शाबाश। द्रोणाचार्य बिल्कुल सही, बरलॉग बिल्कुल सही। बुकर के बच्चे इस बार गड़बड़ कर रहे हैं, एक आधा बच्चा ही बता रहा है। ध्यान से सुनो बेटे, जैसे मैंने इसको ऑन करा तो बिजली का करंट यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, और इसी रास्ते को कंप्लीट, देखो कहीं यही वाला रास्ता सर्किट ब्रेक नहीं करता है, तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर वाला सर्किट कंप्लीट होएगा, लेकिन बल्ब वाला सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। यहाँ पर एयर गैप है, देखो एयर गैप, एयर गैप में से करंट निकलता नहीं, तो यहाँ करंट आएगा ही नहीं, इधर इधर आएगा नहीं, तो बल्ब ग्लो नहीं ग्लो करेगा। तो जो बच्चे कहते थे डबल फिंगर जिन्होंने खड़ा करा बल्ब नहीं ग्लो करेगा, वो सही है। शाबाश, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन खुद से पढ़ो एक बार, खुद से पढ़ो। वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट। एक की ऐसे लगा रखी है, इसको K1 बोला हुआ है। एक की ऐसे लगा रखी है, K2 लगा हुआ बेटे, और यहाँ पर बल्ब लगा रखा है, और नीचे बैटरी लगा रखी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब वो कहता है वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट इफ, कहता है बल्ब को हमने जगाना ही जगाना है, जगाना ही जगाना है। ए ऑप्शन में कहता है कि आपको K1 को ही ऑन करना पड़ेगा सिर्फ। बी ऑप्शन में कह रहा है सिर्फ K2 को ऑन करना पड़ेगा तो भी काम बन जाएगा। सी ऑप्शन में कहता है K1 को भी ऑन करना पड़ेगा, K2 को भी ऑन करना पड़ेगा, और डी ऑप्शन में कह रहा है सभी कंडीशनों में बल्ब जग सकता है, ऑल कैन ग्लो बल्ब। अब जल्दी से फिंगर खड़ी कर दो। जो बच्चे कहते हैं एक फिंगर की K1 को ऑन कर दो, अकेली K1 को, तो भी बल्ब ग्लो करेगा। 2 3 4 सारे देख लो कौन सी फिंगर खड़ी करनी। शाबाश, शाबाश, शाबाश। जो बच्चे कहते हैं सर सारी कंडीशनों में बल्ब ऑन हो जाएगा, वो डी ऑप्शन पे। बुरलॉक बिल्कुल सही, शाबाश, शाबाश सभी बच्चों को। बुरलॉक डाउन। औरा कह रहा है, औरा का गड़बड़ आंसर बेटा ना, ग्रामी का भी गलत हो गया। एबल बिल्कुल सही, एबल बिल्कुल सही, भारत रत्न नो नो नो। अर्जुना बिल्कुल सही, अर्जुना बिल्कुल सही। और बेटे द्रोणाचार्य नहीं, गलत हो गया। द्रोणाचार्य ठीक है, ठीक है। बुक्कर तो जवाब नहीं दे रहा, बुक्कर के बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे। और और एमी के बच्चे कौन सी फिंगर खड़ी कर, 3 फिंगर खड़ी कर रहे हैं ना बेटे। इसका आंसर है इन सारी कंडीशनों में सही हो जाएगा, तो आपको 4 फिंगर खड़ी करनी थी। देखो अगर हम K1 को ऑन कर देंगे तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर से निकला, ऊपर से निकला, बल्ब से निकला, जग जाएगा। अगर अकेले K2 को ऑन करते हैं तो ऐसे ऐसे जाएगा, नीचे से करंट निकल के ऐसे ऐसे बल्ब में से चला जाएगा। अगर दोनों को ऑन कर देते हैं तो भी तो करंट ग्लो कर जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, नीचे से भी जाएगा ऊपर से भी जाएगा।
तो इस जगह में भी बल्ब ग्लो करेगा, इसमें भी बल्ब ग्लो करेगा, इन दोनों में भी बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब आपको ये ऑप्शन खड़ी करनी थी, आपको 4 फिंगर खड़ी करनी थी बेटे। शाबाश। 4 फिंगर कौन से सेक्शन ने खड़ी करी थी? रेज योर हैंड। 4 फिंगर, हाँ, बुरलॉग ने खड़ी करी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। सभी बच्चे ये फिगर बनाए। एक यहां पर स्विच लगा हुआ है S1 और यहां बल्ब लगा हुआ है X, ठीक है। फिर यहां पर एक स्विच लगा हुआ है S2 और एक बल्ब यहां लगा हुआ है Y और नीचे लगी हुई है बैटरी। ओके, ध्यान से सुनो। अब वो कहते हैं इन द गिवन सर्किट स्विच S1 एंड S2, X1 और X बल्ब है, X और Y। अगर स्विच S1 को क्लोज कर दिया, S2 को ओपन, S1 को क्लोज कर दिया, इनको जोड़ देते हैं आपस में, S1 क्लोज है और S2 ओपन है, यानी यहां पर एयर गैप है, यहां पर एयर गैप है। अब आपने बताना है कौन से बल्ब ग्लो करेगा। जो बच्चे कहते हैं सर सिर्फ एक्स ग्लो करेगा, वो एक फिंगर खड़ी करेंगे। जो बच्चे कहते हैं सर वाई ग्लो करेगा, सिर्फ वाई बल्ब ग्लो करेगा, वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे। जो कहते हैं सर नहीं एक्स भी ग्लो करेगा, वाई भी ग्लो करेगा, तो वो, जो कहते हैं एक्स भी नहीं ग्लो करेगा, वाई भी नहीं, दोनों ही नहीं ग्लो करेगा, वो 4 फिंगर। जल्दी से देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है। याद रहे, ये स्विच ऑन है, ये ऑफ है। आपने बताना है कौन सा बल्ब ग्लो करेगा। बुक करके बच्चे सेकंड कह रहे हैं, एमई के बच्चे थर्ड कह रहे हैं, 3 फिंगर है एमई की। बुरलॉग के बच्चे जवाब 3 फिंगर दे रहे हैं। भारत रत्न के 1 फिंगर कह रहे हैं, औरा के डबल कह रहे हैं, ग्रैमी के 3 कह रहे हैं, एबल के डबल कह रहे हैं, अर्जुना के डबल कह रहे हैं, द्रोणाचार्य के डबल कह रहे हैं। अब सुनो बच्चे, देखते हैं, ध्यान से सुनो बेटे। देखो, यहां से करंट जाएगा 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 जाएगा, ये एयर गैप आ गया, उधर जा ही नहीं पाएगा, उधर जा ही नहीं पाएगा करंट, राइट। और इसको ऑन करने से ऐसे गया करंट, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक्स वाला बल्ब तो बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा। और देखो नीचे, जब इधर से देखें वाई वाले को ऐसे गया करंट, ऐसे गया, इधर से करंट ऐसे आ गया, वाई वाले का सर्किट कंप्लीट हो गया। वाई वाला तो ग्लो करेगा, एक्स वाला नहीं करेगा। तो आपकी डबल फिंगर खड़ी होनी चाहिए। जिन बच्चों ने डबल फिंगर खड़ी करी थी उनको शाबाश, ठीक है। इसमें सिर्फ वाई ग्लो करेगा, यहां से सर्किट टूटा हुआ है, एक्स वाले को करंट नहीं मिलेगा तो ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो बाकी का काम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आ गया, वेव योर हैंड्स लाइक दिस, गिव द इंडिकेशन। बहुत अच्छे बेटे, बात। Everyone, how's everybody? So I'm sure you have finished your science now and you can put your worksheets and your books back into your book bag, okay? No clutter on the desk. I just want your English sheet there. And today we are going to do something very interesting in English, okay? So everybody gear up for something fun. Yes, it's going to be lots of fun. Okay, so today we are going to do idioms. How many of you actually know what are idioms? I'm sure you have done in your school, in your class, you have done. Okay, so Aurora House, there is a little girl in the middle row. She raised her hand.
Okay, you can come and tell everyone what are idioms. Yes, very good. Yes, tell me. Without meaning. What? I was unable to understand what you said, beta, because of the voice cracking and I losing words. I could not understand what you said. So could you please repeat it? Still there is some issue. Okay. Anyone else wants to know? Sorry, but I'm unable to understand what you're saying because there is something wrong with your audio system. So anyone else would like to come and share from any other? Yes. Anyone else? Okay. I could see a few hands raised. Okay. Emmy House, there is a boy on my left. He's sitting in the last bench. You can come. Yes, quickly. Thank you, beta. That little girl, but I'm sorry, from the Aurora House, I was unable to understand what you said. Okay, probably you were right. You can go back, Puchi, Aurora House. Yes. Ma'am, the words that's meaning is same. Okay. Okay. So they are like, now see, supposing like I want to, I'm insisting, okay, I'm like, okay, please, meri baat suno. Okay, listen to me, listen to me, listen to me. And somebody is not even paying attention. And then somebody tells me, okay, I'm all ears. I'm all ears. Okay. So if somebody tells you all ears, you'll all start looking for your ears. What ears? But it means, yeah, I'm listening. You can continue. I am going to pay attention to whatever you are saying. So I'm all ears. Okay. So this is the way. Now, why they have this in every language, every single language in the world, we have sayings, we have proverbs, we have idioms, we have all these things, even in Hindi and Punjabi. Okay, you will find like probably your sir chakkar khana, like in Hindi, 900 in Punjabi, 900 chuhe kha ke billi hajnu challi, like all these kind of things. I don't know if nowadays they are used at homes, like but I do use many of them in English, obviously in other languages also. My mother's favorite Punjabi was whenever when I was a little girl, and she would give me some work to do, and I would like not do. She would always say, "Ape mariye te swarg nu jaiye." Like do it yourself. Like that is how it is meant to be. So this is like how you learn things. It's there in everyday language. And to become very proficient in English, you will have to learn these. You'll have to understand them. When you start using them in your everyday conversation, you will be like like a native speaker. You will be speaking the language, so they are a part of it. Okay, so the first one I already told you here in your sheet, all ears. Okay, somebody wants you to listen to my story, and you're like, okay, I'm all ears. So okay, next one, every dog has his day. Okay, in Hindi हम बोलते हैं कभी कि हर कुत्ते का दिन भी आता है. Like sometimes, though it sounds very bad, but every dog has its day. Okay, Aurora House, last bench on my right in blue t-shirt. Come out. Every dog has its day. And I want everyone to participate. I want to see all 200 hands up. Okay, every time. Yes. This is something very easy. Everyone gets the chance. What? Yes, everyone gets a chance. We all get chances in life. It's up to us. Sometimes we miss those chances. Sometimes we are so lazy, we will not avail those chances. So this is like, sometimes they are like, everybody gets a chance. Okay. So this is like chance, like
Bolt from the blue, suddenly. Bolt from the blue. Okay, Arjun, how's this boy? Yes, come forward, come forward. Expected event or piece of news, something crucial or unusual that happens suddenly or unexpectedly. Perfect. That's why I did 2 thumbs for you, because both the answers, yes. The first one is suddenly you get a news. Okay? Like it could be good or bad, anything, some unexpected. It could be a very happy news, it could be like something not very happy. Okay? And second is something crucial. Crucial means important, very important. Okay, so something crucial or unusual that happens, which alag say, like, you were not expecting something and that thing has happened. So you landed this job, it was like a bolt from the blue. Okay, sometimes like, you're not expecting something, so but it happens to you, good or bad, important, unusual. So these are the reasons where you can use this. A piece of cake. Okay, it's okay. This little boy is running out of his bench. Okay, now let me give from some other person a little chance. Okay, there is this boy who's raising his hand in ball log, yellow t-shirt. Yes. Come. Okay, sorry, it's a girl. From here, and with my glasses, I could not make out. Yes. A piece of cake. Would you say, beta, what is it? A piece of cake? Something that is easy to do. Okay. It was, we always say, like, it was a cake walk. Okay, a cake walk also we use like in everyday language. Something I use like a lot. One of my favorite is, you want to have your cake and eat it too. That is another one we can discuss some other time. But yes, a piece of cake means something which is very simple, effortless. Without any great effort, you can finish it. Okay, easy peasy. Next, hit the sack. Hit the sack. Okay, I'm ready to hit the sack. I'll call it a day. I'll hit the sack. Okay, Aurora House, middle row, third bench. This girl in white. Yes, Aja. You're ready to hit the sack? What? And go to bed. Go to bed. Yes, go to bed. Okay. So you decide to go to bed. Okay, tired for the day. I'll call it a day. Call it a day means, chalo, bus. Now let's go and sleep. So instead of saying, let me go and sleep, I'll say, I'll hit the sack. Okay. Raining cats and dogs. Sachi mein cats and dogs given. Okay, there's so many children. Okay. किसको पूछूं ये वाला answer? Abel House. Okay, I'll give chance to the child on my right. There's a girl who's raised her hand. First bench. Aajao. Yes, very good. You will also get better. Next, you will get Abel House, center row, first bench. Next one, it's for you. I'm very heavy rain. Yes, torrential rain. Torrential means जो बहुत, जिसको हम downpour भी बोलते हैं. Like, we said downpour. It was a downpour. Like किसी ने बाल्टियां भर भर के पानी डाला है. I don't know if that kind of rain happens in Punjab. I don't think so. Okay, because even I have been here for such a long time and I've never seen that happen. Like, but in Punjabi also there is a con for it which says Julaiya Tutniya, like, Julaiya, like it is like crazy raining. So that is very heavy downpour, torrential rain. That is called cats and dogs. Okay, next, bread and butter. These two things are always there, are spoken together. Fish and chips, bread and butter. Okay, sugar and salt and pepper, like as if they are like stuck together. They are like one entity. Okay, who will tell me bread and butter? Okay, I can see Bharat Ratna red t-shirt on my right. Ajo. Yes, bread and butter. Something that is very easy to do. Bread and butter? It is something easy.
But what we have already done, that was a piece of cake. So probably you were not paying attention at the time. Here, bread and butter. Yes. Ma'am, your voice when takes in is Yes. Ma'am, your voice is not audible. Really? How many of you can't hear me? Hear me or not hear me? Hear me? Wait. Can't hear me? Put your hand down. Okay. It's Bharat Ratna. Can't hear me? I think so. I'm loud enough. I'm almost screaming. Okay. So it is bread and butter is basic needs. Okay. Or source of income or livelihood. This job is my bread and butter. Okay. Or this is my, I can't mess with this because this is my bread and butter. Like, I earn my living from this source, whatever the source, or it is my basic need. Like, it's not always like thing to eat. It is just telling, okay, this is my basic need. I have need it. Okay. Next, cool as a cucumber. Now see, I know cucumber बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन it is cucumber. Okay, so it is cucumber. Everybody, this pronunciation should never be wrong again. Today you have learned it. You don't say cucumber, it is cucumber. Everybody has to say. अपने mind में 2-3-4 बार बोलो cucumber, 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 and you will learn it. No pronunciation mistake after this. Okay, cool as a cucumber. Okay, Arjun House, last bench. There are 3 boys who are waving. Okay, one of you can come. Okay, everybody knows cucumber is a fruit or a vegetable. Then to be calm and relaxed. Yes, to be very calm. 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 But यहाँ पे this is silent. So we say calm. Calm means poised, shant. Okay. So cool, somebody who's very shant, like calm, and what else? Very, very relaxed person. So so what is cucumber? Is a fruit or a vegetable? Okay, next time let me see. And even tomatoes, are they fruit or vegetables? Although we use them as veggies, but I think so they fall in the category of fruits. Okay, same is with cucumber. I'm not 100% sure here, but tomatoes, I'm 100% sure. Okay, cry over spilled milk or spilt milk. Now see, you will say, why too? Because sometimes it will be spilled. This is American. Americans will use this word, pronunciation. Okay, American word. This is American word. And spilled. This is British English. Okay, both are accepted. Both are accepted. We go with both the spellings. So don't cry over spilt milk. Okay. Aurora House, in the middle row, the yellow t-shirt one. Middle row, yellow t-shirt girl. Okay. Because everybody should get a chance. We have a lot today. Everybody will get a chance. We are people that has already and cannot be changed. Yes. So, glass toot kya? Okay. Like a very expensive like artifact or a showpiece that you have brought for your house, tumse toot gaya while dusting. So you're so upset. But what is the point? No point. Okay. You already, it is done. It can't be mended. It can't be put back together. Forget it. अब जो हो गया सो हो गया. Okay. Don't cry over spilt milk. सिर्फ ये नहीं कि दूध का ग्लास गिरा तब नहीं रोना है. It's like every time anything bad happens, which is out of your control or you did it. Sometimes we also are responsible for some accidents or some nonsensical things.
and then later on we keep repenting. Okay, no point. If you have done, learn from your mistake, learn from your experience, and move on. Okay. If you are stupid enough to keep doing this, repeating the same thing, then it is nonsense. Keep your chin up. Doesn't mean that put your chin up like this. It means keep your chin up. Yes. Abel House, this little boy sitting in the first row, middle row, first bench. Ajao. Keep your chin up. Abel, middle row, first bench. The boy, yes. Aja, aja, fatafat. Keep your chin up. Yes, speak, beta, speak up. I can't hear you, bacha. Oh my God. Remain cheerful in difficult circumstances. Yes. You know, we don't be say, like, whenever people are going through a hard time and sometimes they share it with you, we say, okay, square your shoulders, chest out, shoulders straight, walk. Like, okay, face it. So this is also, keep your chin up. Instead of like, ऐसे मुंह लटकाने से अच्छा, like stand straight and face it. Okay, face the music, whatever it is. Okay, now we have 3 pictures here and you have to guess. Okay, now from the pictures, imagine, it's not necessary that what you guess will be right, but it can be right also, or probably you will be partially right, or probably you will be completely right. I don't know. Okay, so just guess what it could be. Okay, it is going to be fun. They are showing a boat and a person is running after the boat. Kya ho gaya? What happened here? Supposing you wanted to get into that boat, but you are not able to get into the boat. So what word will you use? What word will you use? आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है, आपकी ट्रेन मिस हो जाती है, एंड यहाँ पे क्या हो गया? आपकी बोट मिस हो गई. So here it is, miss the boat. Okay. The first picture will tell you miss the boat. Missed, M-I-S-S-E-D, miss the boat. Now, I want all of you to think, what could this mean? What could this mean? Can you tell me? सोचो. अगर आप आके बताओगे और अगर वो right नहीं हुआ तो भी, yes. Anyhow, that boy in the last bench who has raised his hand, he's right by the window. On my left, please come out. Miss the boat. What does it really mean? Miss the boat. Don't be late. Yes, that means it is that you are late. Late for, it is basically why they say these words. Miss the boat. Boat means it can be a chance you were supposed to get, an opportunity. Okay, an opportunity. So it can be. So you missed a chance or you missed an opportunity. Okay, it could be an opportunity or a chance. So it could be because the time was not right, or it could be your stupidity also. Like, you did not take the chance or you did not take the opportunity. So it is like, you did not do things on time. So that is miss the boat. Everybody write down, miss the boat. Lost an opportunity or chance. And there can be 2 reasons. The reasons could be delay. You did not do the work on time, you delayed it. Okay, supposing there was or there was inaction. You kept being lazy. Inaction.
So these could be the reasons. So it is like, telling a child, when a child, you wanted to get into the school basketball team, okay? But you did not practice much, or you did not take the opportunity, you did not fill your form on time and the team was selected, or you were inactive, you did not take any action, or you were too late and you missed, you are not in the school, not selected. So it can be said, you have missed the boat this time, but next time, stay on time, don't delay things, take timely action, which is very important. So these kind of things, you can say it for a lot of lost opportunities, lot of lost chances. Next, what do you think? What is the happening? What do you have inside your skull? What do you have inside your skull? Brain. And when you do something like this, in English, what word do you use? Yes, Arjun House, there is a boy who's raised his hand. Come forward, beta. Arjun. Pick. Yeah. So you're picking. किसी चीज को ऐसे like, so that word which we use in English is pick. So pick the brain. Pick the brain. So here it is miss the board, the first one, the second picture is pick the brain. Or pick my brain. You can use both. Pick my brain. Pick my brain. I can tell you that. As a teacher, if you want to ask me questions, I can say, okay, pick my brain. Like, this is basically used when somebody is an expert or somebody has more knowledge than you. You want advice. You want knowledge. So you can pick the brain means ask me questions. Ask me questions. Okay, so you can pick my brain. That is why I brought this here. Okay. And I really like the cartoon here. Okay, pick. It's funny. Pick my brain. Ask someone questions. Okay, you can have, this means ask and seek their advice. You're asking questions for advice. You're asking questions for knowledge. You're asking questions because that person has experience, has expertise. So that person is an expert in that field. Okay, so you can ask me questions in English because I think so. I have taught now. I have a lot of experience. Okay, so this next, the third one. It should be very easy. There is an arrow. It's already written there. Okay, way of success. So what do you think it is? Somebody who's going towards the way of success. What do you think it is? On the right path. Okay, so this is basically moving in the right direction. So you will write on the right path. The idiom here is on the right path. Third picture. On the right path. Okay. There is another idiom which can be used like on track. On track. Okay. And we can, the opposite can be off track or off on the wrong path. He's going, हम बोलते हैं ना गलत रास्ते निकल गया हिंदी पंजाबी में. We say गलत रास्ते पे गया, गलत रास्ते निकल गया. Like, that's how we say. So on the right track, on the right path. So this is on the right path. Perfect. You want to reach a goal. You have some kind of like, intention to achieve something. And if you're taking the right measures, you're taking the right opportunities, you're taking the right, and you're working in the right direction. So we say, oh, he's on the right path. Okay. And sometimes if you deviate, you go on the wrong track. So this is how. And sometimes we say, like, sometimes you have made mistakes. You made mistakes and then you come back
after learning from your mistakes, then we say, now this person is on the right path. Now this person has taken the right track or the right path, because first he went on the wrong one, he made mistakes, he came back. So we use it in two or three contexts. Okay, you have some goal or some desire and you work in that direction and you're doing all the right things to be there, then you're on the right track. Sometimes you make mistakes and then you learn from your experience and go back to that path, then we say you're on the right track. Okay, next. So we come back to the fun part now. Yeah. I don't know if you people are aware of these and you will be able to do this, but we can use it as a guesswork and then we can work it on. I can give you hints and clues and then we can do it. Okay. The first one. I don't know if you have come across this one ever in your life. Okay. But we can try. You know, sometimes we can easily guess what it means. So what do you say? The first one, needle in a hay. What could it be? Any guesses? Any guesses? जब हम needle, I'll tell you in Hindi, I can give you a hint. When you say सुई, उसमें से ढूंढनी, घास फूस में से, like, you know, what do you call it? What do you call that सूखी हुई घास in Hindi, in English? I think so. There is a Hindi version of this. So it is hay stack. Needle in a haystack. First, the fourth one. Okay, you can start from this. Needle in a haystack. So haystack means hay, जो सूखा घास होती है ना, which you feed to animals. That is hay. Okay, that golden valley. And then, like, you know, stack is like a whole bale of it or a whole mound of it. So अगर उसमें एक सुई गुम गई, so कैसे ढूंढोगे? Like, it means, like, if you have to look for something which is, like, you know, messed up, or, like, you know, some kind of an answer you're looking for, some kind of thing that is, like, you know, lost and you're still looking for it. So it is like you go, I'm looking for a needle in a haystack. Okay, so that is something which is completely under layers or kahin daba hua hai, and that can't be found easily. Something, and quite impossible also, but trying hard. Okay, so something hidden among many other things. Next, this is very easy. I'm sure many of you know this. Yes. Don't judge a book by its Emmy, first bench, blue t-shirt. Don't judge a book by its cover. Very. Yes. So by its cover. Okay. So don't judge a book by its cover. Like, don't go by outer appearances. Now, see, if somebody saw Gandhiji's outer appearance, somebody would never understand that he was such a great leader who doesn't know anything about him. Okay? He was never, like, you know, very extraordinarily dressed, very simple man. Okay? Nobody would even think that he wrote such amazing books. Same thing goes with many people. Sometimes they look so smart and they are so, like, you know, they wear such amazing clothes, expensive, they look like smart, but actually they are not, they don't have any such thing. So it's not only about people, it's about even things. Okay, that please don't get carried away by the outer look, by the outer. Sometimes the design or the outer cover of the book is so amazing, but the content is useless.
Okay, sometimes the book has like the outer cover is so simple, basic, but the content is amazing. Okay, so this is what it means, that to know something, you have to go delve little deep. Next, 11th one, let the cat out of the, I think so, you know, all of you know this. Yes. Okay, Bharat Ratna, this boy in white on my left, he just stood up. Acha, acha. Let the cat out of the, And bed. out of the And bed. bag. Yes, out of the bag. Okay. Supposing you had a surprise party for your dad and your brother could not keep it, he told him. So that is like revealing. Okay. Either it could be a secret or it could be like something which was not meant to be, like, told now. It was supposed to be told later, okay, on its completion, but somebody just spurted it out. Okay. So that is like your bag is out of the cat. Okay, you think it's a secret? No more secret. It's an open secret now. Under the blank. I'll give you a hint. Not feeling good. You're not feeling well. Under the, I have given you the meaning of this. Not feeling well. Unwell. What will you say? Under the weather. Okay. You are under the weather. I say, oh, I'm little under the weather. I'm under the weather. Okay. So this is basically not feeling good. Unwell. I'm unwell. हमेशा ये नहीं बोलना है, I'm not feeling well. I'm unwell. I'm under the weather. Next. Next is it takes two to. It takes two to. Anybody who knows this one? Okay. It takes two to tango. Okay. Tango is a dance. It's like a Spanish dance. Okay. Very nice one. Like it takes two people to dance. So you should go and watch it on YouTube. It's a beautiful dance, okay? So it takes two to tango. Not one person can dance by himself in this. It's like a more like a partner dance. Couple dance, partner dance. So it takes two to tango means whenever there is a situation or there is any issue or problem or fight, at least there are two parties involved. Okay, not single person can go on fighting with people. So there are always two people involved. So this is two people are required for a problem or for a situation. So this is two to tango. It takes two to tango. Okay, next. Next one we'll do, and then I think so it's time for your class to, I can take, I think so. Teachers, can I take another 5 more minutes? Teachers, I want somebody to answer me. Can I use another 5 minutes? Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Okay, so it takes two to tango, and it's not blank signs. And okay, this little one knows Emmy, first bench, blue t-shirt. Aajo fatafat. Out. Come, come, come. It's not. This is 13. It's not. Okay. Very good. See, it's not rocket science. Okay. That means something is not very complicated or very, like, which needs technicalities or which needs technical knowledge or something like this. So something which can be understood easily. Okay. So it is not rocket science. No rocket science. So anything like, मुझे समझ नहीं आ, like somebody's mom says, अच्छा इस घर में थोड़ी dusting कर दो, ma'am, I can't do that. So it's not rocket science के पता नहीं कैसे करना है. Like you will know, it's easy to understand. Okay, next.
This is again very easy. Kill two birds with one. I know. Bharat Ratna, middle row, last bench. Second last bench. Yes. Middle row, second last bench. Bharat Ratna. $16. Thank you. Stone. You can kill two birds with the stone. That doesn't mean you actually have to kill birds. It means you can do two tasks with one effort. Okay? Something you accomplish by making one effort, two things are accomplished. Okay, so that is to kill a bird, one stone. Okay, to kill two birds with one stone. Don't go and try this, okay? In literal sense. Curiosity kills the. Okay, any center row, last bench. Somebody knows. Curiosity kills the Emmy house. Center row, yes, this little girl. Ajo, ajo. Curiosity kills the. Curiosity kills the. I can't hear you. Curiosity kills the cat. Okay? It means that if you are over curious, you can get into trouble. You can get into a situation. If you are over curious, अगर कोई चीज पापा ने लाके घर में रखी and he said no, don't touch it and you just want to go, थप्पड़ भी लग सकता है. Okay, it can land you into trouble. So that is over curious. Things can be nasty for you. Okay, next. 20 is W. Blank grows on tree. What doesn't grow on tree? बड़ी पापा मम्मी बहुत बार बोलते होंगे when you are asking from some expensive gifts, they tell you in Hindi or Punjabi. They do tell you. What doesn't go on trees? What doesn't grow on trees? Okay. Why I can see only a few hands raised? I thought many would raise. Okay. Bharat Ratna, that boy who's standing. Yes, Aja. On my left, you're standing. Yes. What doesn't grow on trees? When you want an expensive gift, your mom and dad will say, okay, this doesn't grow on trees. Okay. Huh? Yeah. Okay. Money. Okay? So it's basically money. ऐसे पेड़ पे नहीं लगते. ऐसे बोलते हैं ना मम्मी पापा. When you're asking for extraordinary, very, very expensive, Papa, we le do, Papa, this game, that game, like, they're costing like 20, 30,000 and they might be telling you, oh, this money doesn't grow on trees, beta. Okay, next. Great minds think. Great minds think. Minds. They think alike. Okay, so great minds think alike. Alike means same सोचते हैं. Probably like, solutions to the world and like also when two people sometimes like, it's not even you and your friend can like, sometimes you come up to the same kind of solution. Okay, or you resolve the issue in the same manner. So it is alike. I'll just do this one with you and the next one you can try yourself. Okay, next. It costs an arm and a blank. Very easy. Something which is very expensive. Okay. Bharat Ratna, I could see one sitting to the next. Yes. One who's sitting next to the red t-shirt, that white t-shirt wala boy who raised his hand. Acha. It costs an leg. It costs an arm and a. And Very good. That means something is very expensive. Okay. iPhones cost an arm and a leg. Okay, you're spending like 80, 90,000 on the latest iPhone. It does cost an arm and a leg. So iPhones cost an arm and a leg or something which is very expensive. Okay,
So these are the ones we have finished today. And because now we are almost at the end of the class, the next one, down. Try it yourself. Okay. It's going to be a fun game. And then we can, if you want, we can discuss it in the next class about its meanings too. Okay. Have a good day, everyone. Hope you had a good time. You enjoyed it? Yes, I loved it. Okay. Okay. Have a bye. Everyone, stay safe and stay good and have a good day. Thank you.